Let's read the sum together first. Let's read the sum. Opening WDV is 15 lakhs. New asset is acquired on 15/6 for 10 lakhs. तो हमारा क्या है? Opening WDV plus any purchases during the year less sale will give me closing. Opening कितना है? 15 lakhs. Purchases कितना है? 10 lakhs. Sale हुआ है 5,50,000. तो ये कितना हो गया? 9,50,000. 1950. Okay. Now we have to hit a depreciation. For depreciation, I have to hit a depreciation on 1950. $1,90,000. हाँ, तो देखो कैसे करेंगे. I am simply doing used for less than 180 days and more than 180 days. बाकी का जो भी आ गया more than 180 days. Ma'am, everything is more than 180 days. So When is it purchased? No, dude. the purchase was in June and selling was in Okay. Jan. So both अच्छा. are. So purchase कब हुआ है? New asset is purchased in June. तो ये तो पूरा, और ये सेल हुआ. सेल का हमको मतलब ही नहीं है, उस पर नहीं आएगा कुछ भी. सो इट इज़ यूज फॉर 180 डेज, कुछ नहीं आएगा. मोर देन 180 डेज, तो पूरा 19,50,000 इज ऑल यूज फॉर मोर देन 180 डेज. 10%. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? 1,95,000. कितना आएगा आंसर? क्या पूछा है? डेप्री पूछा है. हाँ, डेप्री पूछा है. बस दैट्स इट. But ma'am, my question is that only. Why did you say sale का 5,50,000 consider ही नहीं करना? अरे My because question- listen. When are you hitting the depreciation? On the last day of the year. I already so, and on what are you hitting the depreciation? On the assets which are there on the last day of the year. If the asset is only not there on the last day of the year, how will I hit a depreciation? So I am not hitting a depreciation on an asset which is already sold. Hence it doesn't matter to me when it is sold. Okay. Now, ma'am, my question is this calculate. Okay. So now if I have to take over here, यहाँ देखो मैंने selling price लिखा है. Okay, मैंने यहाँ written down value of the asset I have not taken into account. Reason being, if I take the selling price, मैंने let's take a flip situation. If my written down value, मैंने अपनी books में है ना 10 लाख रुपया is the written down value. If I have sold it for 5,50,000, I will record how much money I have actually got in. Doesn't matter, written down value तो मैं कुछ भी लिखूँ, 25 लाख लिखूँ. Okay, I have to show the real value of the book of my asset. So if I've got only 5,50,000, I'll record 5,50,000. Similarly, I might have recorded my written down value of that one particular asset would be 1 lakh. But जब बेचने गए 5.5 लाख आया. So you, as someone who's reading the financials, you would want to see the real value, right? That मिला कितना? 5,50,000. So this has to be recorded on how much money you've actually got it. Similarly, when you take cost of acquisition, when we had studied cost of acquisition, हमने क्या लिया? Actual cost that you pay including all incidental cost. Okay, you did not take market value over there. You took the actual cost. Similarly, यहाँ भी तुम selling price लोगे so that your books reflect the correct values. Okay, the next sum, इसमें एक छोटा सा twist है. Okay, देखते हैं. When since we are discussing this, opening value is 15 lakhs. New asset is acquired on 15th Jan for 10 lakhs. Depreciation is this, rest everything remains the same. Okay. Now purchase कब हुआ? 15th Jan को. So अगर 15th Jan को depreciation हुआ है, अरे 15th Jan को नया asset acquire किया है, तो depreciation cannot be this. We will have to go and see over here कैसे करना है. Okay, so can I say this asset is used for less than 180 days? क्योंकि जनवरी में ही आया मेरे पास. So if it is this asset is used for less than 180 days, बाकी सारा is used for 180 days, more than 180, तो इसके ऊपर मुझे सिर्फ 5% डेप्री मिलेगा. इस पे पूरा 10% मिलेगा. 5% is what? 50,000 ना. हाँ, ये 50,000 होगा.
और ये 95,000, तो टोटल कितना हो गया 1,45,000. यू सॉ व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द डेप्रिसिएशन. अगर ये एसेट तुमने नया खरीदा है, इसके ऊपर डेप्री मारोगे बिकॉज इट्स गोइंग टू स्टे विथ यू, यू विल गेट ओनली हाफ डेप्रिसिएशन बिकॉज इट्स परचेज ओनली इन जनवरी. मार्च में तो ईयर एंडिंग आ गया, तो उस पर आधा डेप्री मिलेगा. इन नॉट 10%, यू विल गेट ओनली 5%. इसके ऊपर ऑल रिमेनिंग एसेट्स यू विल गेट फुल 10%. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर. वैभव owns a car. The WDV on 1/4/2017 is 3 lakhs. Depreciation you have to hit 15%. Now they are saying 1/3 is used for personal for both years. WDV on 1/4/19 is how much? Simple है, पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे. तो कैन आई से 1/3 मतलब 15% डेप्री है, तो 1/3 विल बी डिसअलाउड. तो 3 लाख है वैल्यू, 30,000 उसका डेप्रीसिएशन होगा. बिजनेस प्रोफेशन नॉर्मली कितना होना चाहिए? 3 लाख का 15% 45,000, उसमें से 30,000 अलाउड होगा, 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा. ओके, 2,70,000 सेम थिंग. 2,70,000 पे यू विल टेक 5% विल बी डिसअलाउड, 10% विल बी अलाउड. ओके, सो ये 10% कितना हो गया? 27,000 विल बी अलाउड. दिस विल बी डिसअलाउड. ओके, कितना होगा ये? लेस करके बोलो. व्हाट इज द अमाउंट? 2,43,000. ओके, दिस विल बी द WDV. Got it? Let's see this provision. 6th वाला, building converted to business profession asset. So it was a residential house property converted into business profession asset. You will take depreciation as though it was always a business profession asset. मतलब 10% from day one you will hit. Okay, 10% from day one. So let's see the question. They are saying Sunil acquired residential house property on this, and he also acquired some land. Now remember one thing, land के ऊपर डेप्री कभी मिलता नहीं है. there is no depreciation on land. It's a non depreciable asset. It is used for personal purpose until June 18, and then it is used for business purpose. Depreciation for business profession will be how much? So तुमको 2 साल का depreciation लेना है, करेक्ट ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी 19 तक तुमको depreciation हिट करना है. 15 lakhs पे पहले 10% लोगे, जो भी आंसर आया. सो 15 minus 10%. 13.5 lakhs. 13,50,000. Then again you will hit 10%. कितना होगा वो? 1 लाख नहीं, 12 लाख. 12,15,000. Got it? Okay, so provisions Yes, clear yes, sir. रखो, you will get the answer. चलो next one. Ma'am, question number 75. Actually, I'm getting the answer wrong. Okay, no problem. चलो. Let's read the sum together. XYZ is into manufacturing of fertilizers. WDV is 80 crores. Asset is acquired. A new asset is acquired on 11/7 for 150 crores. Depreciation is at the rate of 15%. Okay, so opening कितना है? 80 plus purchases 150 लेस सेल कुछ है नहीं, 0. क्लोजिंग आ जाएगा. कितना आएगा ये? 230. ये पूरा का पूरा हमको डेप्रीसिएशन इस पर, बिकॉज पूरा इज यूज फॉर 180 डेज. सो डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15%. कितना होगा ये? %. आई एम गेटिंग 34.5. ओके, ये तो तुमको पूरा मिलेगा. सो आई जस्ट डू 230 माइनस plus there will be, because it is in manufacturing, okay, it should strike you कि इसको additional डेप्री मिलेगा on the new asset. okay, कितना additional मिलेगा? 20%, है ना? 150 crores is the new asset, so उस पर additional मिलेगा 30. कितना होगा ये? Got it? तो तुम्हारा क्लोजिंग WDV क्या होगा? Yes, ma'am. Okay, don't forget the
मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, so it should strike you immediately. Additional depreciation available है. Okay. Okay. चलो next. चलो let's read this question together. Dr. Sen has surgical equipment worth 4,10,000 opening. Okay. As on 1/4, he purchased something new on December 18 for 3,50,000. And he sold the equipment in March of this for 2 lakhs, and जिसका original cost था 1.7. Always you take selling price here. Okay, so ये 2 lakhs less करो. They are asking you what will be his closing WP. चलो ये less करके बोलो कितना आएगा. 4,10,000 plus 3,50,000 minus 2 lakhs. I'm getting 5,60,000 over here. इसके ऊपर तुम डेप्रीशिएट कर दोगे. ओके, पर वो हम लोग ने पूछा नहीं, डेप्रीशिएटेड वैल्यू नहीं पूछा. चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन. रामसे इंडस्ट्रीज acquired factory for self use, मतलब Ramsan Industries will use it, so that means business purpose. In November 2017, land is 5 lakhs, building is 10 lakhs. Find the depreciation allowed. So इसके ऊपर प्लीज़ डेप्रीसिएशन मत लेना. लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन होता ही नहीं है कभी भी लाइफ में. बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन ले लोगे. बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन मिलता है? 10%. ओके, प्रोवाइडेड इट इज़ यूज फॉर 180 days. नाउ इज द बिल्डिंग यूज फॉर 180 days. जब नवंबर में लिया है तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च 5 ही महीना हुआ, तो डेप्रीसिएशन फॉर लेस देन 180 days ना. 5 ही महीना हुआ, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना कहाँ हुआ? 180 days चाहिए ना, तो ये 5% डेप्री होगा. ओके, अगर दैट्स वाई हाफ डेप्रीसिएशन. नॉर्मली कितना लेते हो? पूरा डेप्रीसिएशन 10%. गॉट इट? We are doing some Bangar MCQs today. Let's read the question. There's one question which says Q and Company is a sole proprietorship. It was converted into a company on 1/9/2018. So a sole proprietorship got converted into a company. Okay. Before conversion, the sole proprietorship had a plant and machinery for which the opening value is 3 lakhs. Okay, ये opening value दे दिया. On 1/4, it purchased new machinery. So there is a purchase that happened on 1/4, start of the year only, for 1,20,000. There is no sale. Then the company purchased on 1/1/19. That is after the conversion, it became a company. On 1/9/18, it became a company. And then the company purchased new machinery for 1,60,000. Compute depreciation for the company and sole proprietorship. So understand what is happening in the question. In this question, we start with a sole proprietorship. For the first 5 months, that is April, May, June, July, August, it is running as a sole proprietorship. Then it is getting converted into a company. So during 1 year, we have 2 entities, a sole proprietorship and a company. So the depreciation for the assets will be split between the company and sole proprietorship. Okay, तो हम नॉर्मल डेप्रीसिएशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस सेल विल गिव मी द क्लोजिंग. वाई डिड आई नॉट टेक दिस अमाउंट? बिकॉज दिस दे आर सेइंग इज एक्सक्लूसिवली परचेज बाय द कंपनी. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम नॉर्मल एसेट्स पहले कैलकुलेट कर रहे हैं जो कॉमन है बिटवीन कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. सो दीज एसेट्स वर हेल्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप, एज नाउ इट इज गेटिंग converted into company. So now it will be transferred to company. So see here, क्या किया मैंने? क्लोजिंग ढूंढा, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन ले लिया. तो 4,20,000 पे डेप्रीसिएशन for the full year will be 63,000. Now this 63,000 is the depreciation. It will be split between sole proprietorship and company. See in what ratio? 5:7. Why 5:7? For 5 months, April, May, June, July, August, it was a sole proprietorship. For the remaining months, it was a company. So it will be split in the ratio 5:7. So we
in this ratio 63,000 will be split. So you get this 26,250 and you get 36,750. Now this is fine, sole proprietorship के लिए ठीक है. कंपनी का देखो, कंपनी ने एक और एसेट खरीदा है, बट वो कंपनी ने कब खरीदा है? इन जनवरी. सो इट विल नॉट गेट फुल डेप्रिसिएशन, इट विल गेट ओनली हाफ डेप्रिसिएशन ईयर. हाफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 12,000. So it will be 36,750 plus 12,000 for the company. Okay. Now if you see, I'm doing it in months. Ideally you should do it in number of days. तो तुम ढूंढो अप्रैल में कितने डेज हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, and you will get that number of days. So this will, let's say for example, this is 150 days divided by the is to that other days. Okay. You will get the exact answer in 26250 या ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा 26408. We don't have so much time. We have 1 minute. We just split it in number of months. We will get it. तुमको days में करना है, तुमको exact number आएगा 26408. We don't have that much time. Okay? You all didn't understand? Ask me. 48 of Bangar. देखो. So let's read this question. In 1819, assessee incurred 6 lakhs as preliminary expenses. Cost of fixed assets is 100 lakhs. Amount of deduction under section 35D is what they are asking. So what we'll have to do, first we'll have to compare 5% cost of capital or 5% cost of project. तो हमको दे दिया है वो with the actual preliminary expenses. तो 5% of cost of capital is nothing but 5% of 100, which is 5 lakhs. Compare it, so this is my A. Compare it with actual preliminary expenses. So that is 6 lakhs. Whichever is lower, that will be the amount of deduction that you will get under section 35D. Okay? And you will divide it in 5 equal installments. Therefore, you will get 1/5. That is 1 lakh each year. Okay, in the current assessment year. So 1 lakh for 5 years. For 1 lakh each. Got it? See this question. XYZ paid bonus of 25,000 rupees to Seema, who's an employee. And amount allowable as per section 48(2), that is as per the bonus act, would be 20,000. What is the deduction they are asking that XYZ can claim if the amount that is paid as bonus is actually payable as profit or dividend? So first understand this. ये मेरा net profit हुआ. Net profit के बाद हम लोग tax pay करेंगे. So you'll get net profit after tax. And then this amount is then payable as a dividend. Correct? So what you do, first you find the net profit. We call it net profit or income from business profession. उसके बाद टैक्स पे होता है. टैक्स पे होने के बाद डिविडेंड पे आउट होता है. ओके, सो डिविडेंड इज पेड व्हेन, पहले डिविडेंड लेस होता है कि बाद में? डिविडेंड इज पेड afterwards. After you find out the net profit after tax, then the amount is paid as a dividend. So they are asking that if this amount is paid, is actually payable as a dividend, amount is actually payable as a dividend or a profit, how much deduction can the company claim? The company cannot claim a deduction first. If the amount is payable as a dividend or a profit, तो पहले profit कैसे ढूंढोगे? Okay, profit or dividend is arrived at only after taking all the expenses and then you give this amount. तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसको ज़्यादा बोनस मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ कम बोनस मिलेगा. सो इट इज़ एक्चुअली नॉट बोनस, इट इज़ नथिंग बट एज अ डिविडेंड. सो दे आर, इफ इट इज़ अ डिविडेंड, इट शुड स्ट्राइक यू दैट वो तो हो सकता है आफ्टर आई पे माई टैक्सेज, आफ्टर आई फाइंड आउट माई प्रॉफिट, देन दैट अमाउंट आई गेट, उसमें से डिविडेंड पे होता है. ओके, so this amount, this dividend is subtracted from NPAT. Can I say that I will get a deduction before? अरे अगर यहाँ लॉस हुआ तो उसको ये मिलेगा ही नहीं डिविडेंड. सो कैन आई क्लेम अ डिडक्शन बिफोर? नो, नो डिडक्शन इज अलाउड.
because this is nothing but distribution of profits. Okay, so no deduction will be. If it was a normal bonus और ये line नहीं लिखी रहती, it is payable as a profit or dividend, then you would have given जितना उसने pay किया है. Okay, how much of a dividend he has paid, the company XYZ has paid under section 43B, उसको पूरा amount मिलेगा. Okay, any employee benefit like a provident fund, bonus, अगर actual payment किया है वो amount मिलेगा. But in this case this is called a bonus, but it is actually amount payable as a dividend or a profit distribution. Hence यहाँ कोई deduction नहीं मिलेगा. Normal bonus होता तो मिलता, जितना पे किया उतना मिलता. I am giving a variations. इस यही टाइप के सम में XYZ paid a sum of 25,000 to Seema, who is an employee, for bonus for services rendered during the year. Such amount was paid to her on June 15, 2018. So ये वाला पार्ट निकाल देंगे. Amount is payable as nothing. Okay, all I'm saying is this amount is paid when amount paid is this. Amount paid on 15th June 19. मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर हमारा 18-19 है, हमको डिडक्शन ढूंढना है प्रीवियस ईयर 18-19 में. हमने पेमेंट कब किया, ईयर एंडिंग के बाद. ओके, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट अलाउड एज अ डिडक्शन. सो नाउ सी ईयर, यहाँ दिस इज नॉट अमाउंट पेएबल एज प्रॉफिट कुछ नहीं है. सो इन दैट केस उसको डिडक्शन मिलेगा. ओके, डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना यहाँ बोला है अमाउंट अलाउड एज पर लॉ 48 टू कितना बोलता है 20,000, उसको डिडक्शन मिल जाएगा. बट उसने पे नहीं किया इन द फाइनेंशियल ईयर. येस, इफ ही हैज नॉट पेड इन द फाइनेंशियल ईयर, he has to pay XYZ has to pay before return filing date, before return of income filing date. तो before return filing date क्या है, 30th September of the assessment year. तो मार्च में ईयर खत्म होता है, 30th September से पहले भर दो. तो उसने तो भर दिया ना, 15 जून तक भर दिया. ईयर 31 मार्च 19 को खत्म, 31 मार्च 19 को खत्म होता है, उसने 15 जून 19 को पे किया. ओके, बट दे आर सेइंग 30th सितंबर तक तुम पे कर सकते हो. सो इफ इट इज एट लीस्ट बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट, ओनली फॉर दोज अमाउंट्स इन सेक्शन 43B जो हमने देखा था TBLIC, उसमें बी क्या था, बोनस, टैक्सेस, लीव एनकैशमेंट, इंटरेस्ट, ओके, एनी प्रोविडेंट फंड, कमीशन एक्सेट्रा, तो वो इधर आएगा. ओके, तो ये बोनस है. बोनस कब तक तुमको पे करना है, अगर ये करंट ईयर में तुमने पे नहीं किया है, फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में, बट यू कैन पे बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट. तो बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट पे किया है तो उसको जितना अलाउ करता है लॉ उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा. लास्ट इसके अर्लियर वर्जन में क्या था, दिस अमाउंट इज पेड एज अ बोनस, अरे एज अ प्रॉफिट और अ डिविडेंड, देन यू नॉट गेट अ डिडक्शन. See here, if the date is 15th October 2019, that means after the return filing date, return file कर दिया और तुमने पेमेंट किया नहीं तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो कब तक रिटर्न फाइल करना है, 30th सितंबर को. सो दे आर सेइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 0 सिंस पेमेंट इज मेड आफ्टर रिटर्न फाइलिंग डेट. गॉट इट. वी डिड एक ही सम में 3 वेरिएशंस देखे. पहले अगर उसको डिविडेंड बोला है तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं. डिविडेंड पे, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस. ओके, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वी आर फाइंडिंग प्रॉफिट, तो नहीं मिलेगा. सेकेंड, वी सॉ दैट उसने पेमेंट किया है बट ईयर एंडिंग के बाद 31 मार्च के बाद किया है, बट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले, तो मिल जाएगा. ये वाले केस में देखो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद उसने पेमेंट किया है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा. XYZ paid bonus 25,000, allowed as per law is 28,000. तो लॉ क्या बोलता है, देखो तुम 28,000 तक बोनस दे सकते हो.
बट XYZ ने क्या किया, बोनस कम पे किया. लॉ बोलता है 28,000 तक दे सकते हो, उसने 25 ही दिया. ओके, और उसने कब पे किया, 15th अगस्त को. 15th अगस्त, दैट मीन्स ईयर एंडिंग इज 31st March 19. ओके, सो year paid is 25. Law says 28. उसको मिलेगा कितना, जितना पे किया उतना ही. अगर लॉ बोलता है 1 लाख बट उसने दिया 10,000 तो थोड़ी उसको 1 लाख का डिडक्शन देंगे. उसको मिलेगा कितना, 25,000. बट विल ही गेट इट between the two amounts? He'll get 25. Okay, now when is the return filing date? 30th September. So he has paid it before return filing date. So payment made before return filing date in August 2019. Hence he'll get a deduction of how much? The amount paid is allowed as deduction. Okay, writing it down. We'll read it together. See, there is a question which says Mr. A took a loan of 10 lakhs on 15 June 17. So he took some loan 10 lakh ka on 15 June 18. On 15 June 18 he took a loan for purchase of an asset. The asset was put to use. This loan is taken for an asset. Asset is put to use on 1st April 19. तो उसने कब लोन लिया? Can I say in the year 1819 he took a loan? Okay, asset was put to use in the year 1920. Then interest paid for the period till the asset was put to use. So interest paid till the asset was put to use. Till the asset was put to use is how much? 60,000. मतलब asset कब 1/4/19 को उसने asset put to use किया, मतलब he started using the asset. Okay, he took a loan before that. Now understand this, तुम्हारा plant and machinery अगर तुमने आज के दिन में यह put to use, so you can incur all expenses on the plant and machinery including interest you can take as a deduction in the year 1920. Correct? But they are saying not that. They are saying the interest is paid till the asset was put to use. मतलब in the year 1819. In the year 1819 he paid 60,000 as interest. So they want to know what is the amount of deduction. Amount of deduction for interest basically. Will he get the interest for the period where there was no asset was not put to use? No. तो अगर asset is not put to use उसके expenses भी तुमको deduction के लिए नहीं मिलेंगे. Simple है. Amount of deduction for asset nil. Okay, why? Because there was no asset put to use in the year 1819. The asset was put to use only in 1920. Hence, there will be no deduction available. Now, यही question को, if I just change it a little bit, interest paid, okay, for the asset in the year 1920 or after the asset is put to use. ये till is before. After the asset is put to use मिलेगा तुमको 60,000 deduction. But before the asset is put to use, you will not get a deduction. In this question what you have to remember, अगर बिजनेस में एसेट ही नहीं है तो बिजनेस का खर्चा कैसे लोगे? एसेट आना चाहिए ना. अगर बिजनेस में एसेट आएगा तो तुम उसके खर्चे लोगे. अगर एसेट ही नहीं आया, खर्चे ले रहे हो, नहीं चलेगा. An employer paid an amount of 10,000 as insurance premium on the health of his employees under a scheme framed by the GIC. Such payment was made by check. The insurance amount was of 10 lakhs. 10 lakh का insurance amount है principal. You don't have to pay 10 lakhs. You have to pay 10%. So 10% कितना है? 10,000 rupees. They are asking, is this amount available as a deduction? Yes, 10,000 will be available as a deduction.
to the employees, to the employer, because he is paid because it is for the health of his employees, allowed as a deduction. Okay, इसका एक और ट्विस्ट है ये सब में. एम्प्लॉयर पेड एन अमाउंट ऑफ 30,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉयज अंडर अ स्कीम इन बिहाफ by the GIC. Such payment was made by cash. The insurance amount is 3 lakhs. तो उसने कितना पे किया है? 30,000. Okay. The amount of deduction available to the employer is 0. You cannot pay the amount in cash. Not allowed. Okay. So अगर चेक से पे किया है तो मिल जाएगा डिडक्शन. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स. बैड डेट्स मतलब मैंने अपने बुक में है ना इनकम दिखाया. लाइक इफ आई हैव asked, if I have given money to you, okay, I know that you are going to give it to me after 1 year. So for me it is a receivable. मेरी books में it will be an outstanding or a receivable. Okay, so I have recorded in my books that money, let's say if I have given you 1 lakh, this money is outstanding, or I can say it is a receivable. Okay, money is receivable. अब तो ये अगर 1 लाख तुमने मुझे दिया नहीं, सो देन ओनली आई कैन रिकॉर्ड एज अ बैड डेट, बिकॉज इन माई बुक्स दिस 1 lakh विल नाउ नॉट कम, सो इट विल बिकम 1 lakh विल बिकम अ बैड डेट. लेट्स से आई गिव यू 1 lakh, ओके, बट मैंने अपनी बुक्स में रिसीवेबल दिखाया ही नहीं है, तो मेरी बुक्स में तो अकाउंटेड ही नहीं है. दिस अमाउंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर 1 lakh. अकाउंटिंग इज ओनली नॉट डन. कैन आई सडनली से दैट अरे बैड डेट्स हो गया मेरा 1 lakh? So if someone who's looking at the books will say, "Arey, how is it a bad debt? If there is no receivable, how can I say the money is not going to come or the money has not come in?" पहले I have to record it and say that money is going to come, hence it is a receivable. अगर वो पैसा नहीं आया तब हम बोलेंगे that it is a bad debt. So let's see a question on this. Let's read the question. Ramesh takes into account rupees 2,50,000 as a debt in 1718. So इसकी बुक्स में रिकॉर्डेड है 2.5 लाख रुपया आने वाला है. However in 1819 1,35,000 is irrevocable, मतलब वो पैसा नहीं आने वाला है. They are asking amount to be written off or amount to be recorded as a bad debt will be how much? 1,35,000. Okay, now इसमें this was simple. पैसा नहीं आएगा. मैंने बुक में 2.5 लाख लिखा है 1 साल में. अब मेरे को पता है 2.5 लाख आने वाला है, नहीं आया. 1,35,000 is irrevocable, hence it will become a bad debt in my books. Same question, I am changing one thing. R does not take into account rupees 2,50,000 as debt in 1718. Okay, the debt is accrued to him, money is accrued to him, he does not take into account, and in 1819 this amount is irrevocable. So he gives a debt but it is not taken into account. How much amount will be written off? In this case it will be, amount will be 0, bad debt will be equal to 0. Why? Because it is not recorded in the books. Okay, ये क्वेश्चन देखो. जयपुर बैंक मेंटेन्स एन RDD. एडवांस बाय रूरल बैंक इज 25 lakhs. एडवांस बाय अर्बन ब्रांचेस इज 35 lakhs. दे आर सेइंग क्रेडिट बैलेंस फॉर द RDD is 60 lakhs. That means opening I can say is 60 lakhs. Okay, I hope it is opening only. Right? Credit. The total credit balance provision for bad and doubtful debt account was 60 lakhs. Okay, so when they say credit balance, I am assuming it is credit balance was this much. So this is not opening balance. They are saying the total balance was after doing all the calculation. क्योंकि हम उन लोग ने हमें total income नहीं दिया है. So I cannot find the current year RDD. Anyway, they have given me the credit balance for RDD. So if the balance, I am assuming that this is the closing balance. Credit balance is 60 lakhs. मेरे पास balance in the reserve for doubtful provision is of 60 lakhs. Actual bad debts is of 68 lakhs. That means I will take 60 lakhs from here. Remaining 8 lakhs का क्या करूँगी? I will show it as the bad debts in my PNL और PNL से डेबिट होगा. पहले RDD से निकाल दो जितना होता है,
और जो भी फिर बच गया फिर P&L में हिट करो. सो व्हाट विल बी द एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड एज अ डिडक्शन विल बी 8 lakhs विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन योर P&L. देखो ये ओके ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. दे हैव डायरेक्टली गिवन यू बैलेंस RDD इज 60 lakhs. दैट मीन्स आई विल टेक क्रेडिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे. अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता तो तुम क्या करते हो ओपनिंग प्लस करंट ईयर ऐसे ढूंढते. ओके विल गिव यू द क्लोजिंग में से तुम एक्चुअल बैड डेट्स लेस करते हो. ओके इन दिस केस दे आर सेइंग क्रेडिट बैलेंस फॉर RDD. सो आई एम अज्यूमिंग इट इज द क्लोजिंग बैलेंस. It is 60 lakhs. So actual bad debts is 68 lakhs. So how much debit will I hit in my P&L? I will hit 8 lakhs. A scheduled bank has a gross total income of 750 lakhs and rural advances of 150 lakhs for the previous year 1920. The opening RDD is 50 lakhs. So they could have given you closing RDD for the previous year 1819. So it should strike you that is opening RDD for 1920 and they are saying bad debts for the year 1920 is 150 lakhs. Compute the deduction allowed. So what you will do is you will start with opening RDD, okay, plus current year. Opening plus current year will give you closing. तो हमने opening plus current year किया. Opening was already given to me. Current year I have to find out. कैसे find out करेंगे? Whatever you get is the closing amount. So current year में you will take 8.5% of GTI plus 10% of rural advances. 8.5% of GTI. तो GTI हमको दे दिया है प्लस रूरल एडवांसेस दे दिया है 10%. तो टोटल तुमको 78.75 you will get for the current year. You will subtract it from bad debts. 150 lakhs less करोगे. Okay, closing minus bad debts will give you the deduction that you will take this year. Okay, let's read this sum. Z Limited, a manufacturing company, acquired plant and machinery of 5 lakhs in Jan 2019. It paid 4 lakhs through bank and 1 lakh in cash. Find the depreciation. It should immediately strike you. 1 लाख तुम कैश में दोगे तो ये डिसअलाउ होगा. ओके एक दिन में 10,000 तक ही तुम कैश एक्सपेंडिचर कर सकते हो. 1 लाख उसने दे दिया डिसअलाउड. ओके बेसिकली जो तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी कितना है कॉस्ट 4 लाख. 4 लाख में इसने जनवरी में खरीदा है तो पूरा 10-15% डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. प्लांट एंड मशीनरी पे 15% मिलता है. सो ही विल गेट ओनली 7.5%, हाफ डेप्री. ओके 30,000 प्लस. नाउ दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सो इट शुड इमीडिएटली स्ट्राइक यू दैट हाँ इसको एडिशनल डेप्री भी मिलेगा. ओके कितना बट इट इज़ हाफ. 20% इज एडिशनल डेप्री तो उसको 20 नहीं 10% मिलेगा 40,000. तो टोटल डेप्री इसको कितना मिल जाएगा डिडक्शन के लिए 70,000. Any cash expenditure entire amount is disallowed. You can't purchase your capital assets with cash. Not allowed. वो देखो 10,000 है ना वो पेटी कैश के लिए दिया है तुमको. चाय पानी का खर्चा वैसा सब तुम जाके यू कैन नॉट गो एंड पे मनी फॉर अ एसेट थ्रू कैश. नॉट अलाउड. एनी अमाउंट okay that you put in this special reserve we will give you a deduction provided this amount that you put is 20% of the profits or twice of the paid up capital and general reserve minus your opening special reserve account or the amount that you have actually transferred. हम तुमको डिडक्शन देंगे. नॉर्मली तुम रिजर्व बनाते हो तुमको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है बट बिकॉज यू आर अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा वी आर गोइंग टू गिव यू अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वी आर गोइंग टू गिव यू अ डिडक्शन. डिडक्शन क्या होगा 20% of your profits or amount paid or twice into paid up capital and general reserve minus opening special reserve account. Okay, so now let's see this sum. What was the sum number? Sorry, 155. So Atul Financial Housing Company for the year ended on 31st March 2019 has profits of बोल दिया है profits उसका कितना है. I'm just writing the question. profits है उसका 560 lakhs. Okay, then they have given the paid up capital of the company is 500 lakhs. General reserve
is 100 lakhs and balance in the SR special reserve as on the year ending 31st March 2017 is the balance of year ending 31st March 31st March 18 दिया 31st March 18, that means it is opening balance 1419. we need opening balance कितना दिया है वो 1100. okay, so they are asking you and the amount actually transferred to SR is 150 lakhs. They are asking you how much is allowed as a deduction. Least of the following is allowed as a deduction. तो देखो कितना आएगा ये 20% ऑफ प्रॉफिट्स. सो ये करेंगे तो कितना आएगा 20% ऑफ प्रॉफिट. यहाँ है तुम्हारा प्रॉफिट. ओके 560 लैक्स. कितना होगा वो करो. 112. Okay, then now we have to take this 2 into paid up. So I'll do it here. Paid up share capital तुम्हारा कितना है 500 lakhs plus your general reserve 100. okay, so that will be how much 600. the whole minus 1100, correct. so this will be 1200 minus 1100. तो ये हो गया तुम्हारा this will be only 100 lakhs. okay, and the last one amount actually transferred 150 lakhs. so कौन सा है least of the following. okay, so this amount will be allowed as a deduction. got it. ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये आंसर है, देख लो आराम से. Assessee incurred capital expenditure of 50,000 and revenue expenditure of 7,000 for promotion of family planning amongst his employees. They are asking you calculate deduction. As soon as you read the question, you should know that हाँ revenue expenditure तो 100% deduction तो मिलेगा ही, इसके ऊपर कोई हमको रोक नहीं सकता है. However, capital expenditure I will get as a deduction only if it is a part of 35. Yes, it is a part of 35. Family planning for employees is allowed as a deduction, but in 5 equal installments. So capital expenditure is allowed, but in 5 equal installments. full 100% you will get, but यहाँ अभी तुमको कितना मिलेगा 10,000. next year again 10,000. okay, so this year you will get 17,000. you have to just remember capital expenditure under section 35 for family planning is allowed in 5 equal installments. full 100% is allowed. 100% of capital expenditure for family planning is allowed in 5 equal installments. तो ये हो गया. Any expenditure incurred by hotelier for replacement of carpets etc. this is nothing but like your repairs and maintenance. okay, so if you are doing repairs and maintenance, it is a maintenance job. even though you are replacing something, that is because it's become bad. so in that case what will happen, it is replacement, and any maintenance, repairs, maintenance etc. it will be a revenue expenditure. okay, what is the meaning of this? expenditure incurred in perfecting a title or removing defects in title. when you purchase property, or let's say if from your parents or grandparents the house is now transferred to your parents. अब जब पेरेंट्स को ट्रांसफर होते हैं ना, बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए रहता है. यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज, गेट इट, यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, यू हैव टू गेट इट ट्रांसफर्ड, रजिस्टर्ड एक्सेट्रा. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, okay, whenever you are incurring so much expenses for removing the defects in title, this is a cost that you are going to incur, and this is a substantial cost. छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है. जैसे अभी ये घर okay is in the name of my grandfather. if I wanted to get it in the name of my mother or father, I have to incur LBT tax होता है. okay, then there is your stamp duty payable, then there is registration cost. तो लाखों में चला जाता है. any such amount that you are incurring is nothing but a capital expenditure. it is nothing but a capital expenditure. another way to look at it, when you purchase cost of a house, let's say तुमने 1 करोड़ का घर खरीदा, plus when you incur any expenses for that, for registration of that house, okay, so we call it any sale, any consideration and any transfer expenses तुमको करने पड़ेंगे. सो ट्रांसफर एक्सपेंसेस तुम्हारा 10 लाख हो गया, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया 1 करोड़ 10 लाख.
Okay, 1 crore 10 lakh will be the cost of your asset. What did you do? You added it to the value of the asset. Okay, so this is nothing but perfecting the title or removing defects in title. Any house का title document होना चाहिए. So this is nothing but it is a capital expenditure. Okay, because you're going to add it in the cost. तुम अगर घर भी खरीदने जाते हो ना, नॉर्मल सिचुएशन में तुम घर पूछते हो, फिर पूछते हो जीएसटी का कितना लगेगा, तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा, एंड देन यू से अच्छा 1 करोड़ का घर है पर 10 लाख तो मुझे और खर्चा होगा. सो 1 करोड़ 10 lakhs विल बी द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड. ओके. सन ऑफ रघु वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन द फर्म. मतलब रघु की फर्म में रघु के बेटे को नौकरी पे रखा है. रघु मेड अ पेमेंट ऑफ 30 lakhs सैलरी टू हिज सन, where the assessing officer is of the opinion that the expenditure is excessive and unreasonable, and having regard to the fair market value it should be 24 lakhs. तो अगर assessing officer बोल रहा है 24 लाख, तुमने 30 lakhs दिया है, तो तुमको मिलेगा कितना? 24 लाख. ओके, सो दे आर आस्किंग कैलकुलेट द अमाउंट डिसअलाउड. तुमने कितना दिया है उसको? 30 lakhs. इज ही सेइंग दैट 30 lakhs इज नॉट अलाउड? नो, ही सेइंग 24 lakhs होना चाहिए. तो 6 lakhs विल बी डिसअलाउड. ओके, इन दिस क्वेश्चन 6 lakhs. ओके, नाउ सी हियर, गुड क्वेश्चन. समीर सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000. He wrote off 10,000 as bad debts. Then the defaulter made a payment of 45,000. Find the taxable amount. ओके, ना इसमें डेट्स वेट्स दिया है, दैट इज इररेलेवेंट. बट सी हियर, समीर ने गुड्स कितने का बेचा? 50K. तो उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड है 50K का बेचा है, तो 50K इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय मी, इज रिसीवेबल. बट उसने क्या राइट ऑफ कर दिया? 10K इज रिटन ऑफ. सो दिस अमाउंट इज अमाउंट रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग अमाउंट. इसने ये बैड डेट करके राइट ऑफ कर दिया. अब इसकी बुक्स में कितना दिख रहा है? 40K is still receivable in his books, correct? 50K अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, अब उसने 10,000 बैड डेट्स करके राइट ऑफ कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब कितना दिखेगा? 40K. उसके अगेंस्ट उसको मिला कितना? डिफॉल्टर मेड पेमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड शुड बी 40K, बट अमाउंट रिसीव्ड इज हाउ मच? 45K. तो दिस 5K इज व्हाट? द एक्स्ट्रा विच विल बी नाउ टैक्स्ड. अगर 40K मिलता तो थोड़ी टैक्स होता. 40K आउटस्टैंडिंग है, मिल गया, हो गया. सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 5K. अंडरस्टैंड दिस. 50,000 आउटस्टैंडिंग था, मैंने राइट ऑफ 10,000 कर दिया. अब मेरी बुक्स में तो दिख रहा है कि 40,000 आना है, बट आ गया 45, तो 5 क्या हो गया? मेरे लिए इनकम हो गया. एस लिमिटेड मेड अ प्रोविजन ऑफ फॉर बोनस. ओके, as soon as you see bonus you should remind you TBLIC. okay, section 43B, मतलब amount should be paid on or before return filing date. return filing date क्या है? 30th September. ओके, सो उसने क्या किया? 31st मार्च को 12 लाख का प्रोविजन किया, और 12 लाख उसने पे किया, बट कब पे किया? नेक्स्ट ईयर 18-19 में प्रोविजन बनाया. पे कब किया? 19-20 में किया. बट देखो कैसे, 7 lakhs on 31st July, when he has to pay on or before 30th September. तो ये मिल जाएगा, ठीक है. ये कब किया? 30th September. ये भी मिल जाएगा. ये कब किया? दिसंबर. नहीं मिलेगा, तो 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा. सो एनीथिंग विच इज बोनस, टैक्सेस, लीव एनकैशमेंट, इंटरेस्ट, एनी फंड पेमेंट, एनी कमीशन शुड बी मेड before the return filing date. So you can make a provision, but actual payment has to be made before the return filing date. So I'll read it. Appu Limited contributed 7 lakh 50 towards PF. It actually remitted 5 lakhs up to 31st March and 2 lakh 50 up to the due date for filing return. The amount liable to tax would be 0. Amount liable to tax will be 0. कैसे 0? क्योंकि 5 lakhs और 2 lakh 50 दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसको कितना एक्चुअल टैक्स भरना पड़ेगा? 0. See this question, they are saying that stamp duty value is 90 lakhs, agreement value is 75 lakhs. Okay, what is the value of consideration to be taken? यही पूछा ना क्वेश्चन में. What is the question?
What shall be the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer for the purpose of computing profits and gains from transfer of such asset? Okay, now see here. What we have to do is the difference first we have to find out. Is it more than 5% or less than 5%? वो हमको डिटरमाइन करना है, yes or no, वो चेक करना है हमको. ओके, तो डिफरेंस कितना है? 90 lakhs माइनस 75 lakhs, कितना होगा वो? 15 lakhs ना. Is this more than, difference is 15 lakhs. What is 5% of 5% of stamp duty value is only 4.5 lakhs. So your difference can be maximum 4.5 lakhs. हमारे केस में तो है ही नहीं, हमारा डिफरेंस तो कितना है? 15 lakhs. If the difference was 5% of stamp duty value, 5% of stamp duty value is only 4.5 lakhs. तो अगर ये तुम अमाउंट अग्रीमेंट वैल्यू है ना if the difference would be around 84-85 lakhs, तो हम तुमको जाने देते. बट अब जाने नहीं देंगे. अब तुम्हारा क्या वैल्यू लेंगे? वी विल टेक द कंसिडरेशन वैल्यू विल बी 90 lakhs. तुमने कितना रिकॉर्ड किया है? 75 lakhs in your books. Okay, recorded is how much? 75 lakhs. Very good. So now we will add how much? 15 lakhs. So how much more will have to be added? You have already recorded 75. So we cannot tell you that और वापस 90 ऐड करो. नहीं, तुमने क्या रिकॉर्ड किया है? 75 lakhs. तो अब कितना और रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 15 lakhs. तब जाके टोटल 90 lakhs रिकॉर्डेड होगा. तो हाउ मच मोर consideration has to be added? You have recorded only 75 ना, you should have recorded how much? 90. तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जाके तुम बुक्स में चेंज नहीं कर सकते हो, कैंसिल. You just have to add another 15 lakhs. Okay. This is Pawan has net income of 5 lakhs and he is growing rubber. तो रबर के लिए बिजनेस इनकम कितना होगा? 35%. So net income तुम्हारा 5 lakhs का 35% करो. I'm getting 1,75,000. Okay.